So how was the session and also the new Bhumi brownie? So The how was like? Bhumi brownie, I think I'm looking really nice because the food is something that makes me really happy. Like it makes everybody happy, and we had such a fun cooking session. You know, they say cooking is therapeutic, and I think I've had a small little therapy session right now inside, and we made the Bhumi brownie with ingredients that kind of fit my lifestyle and my diet, and it was so tasty. Honestly, I wanted to go for another bite, but I said, you know, Bhumi, maybe not in front of so many people. But it was so good. Chef Varun is just, he is one of the best, like, chefs, especially in Asia Pacific. And he's just such good energy. It was conversational. We spoke, we chatted. And yeah, for the love of food, there's a huge smile on my face. Okay, Bhumi, in real life, how foodie are you? I think everybody knows I'm a very big foodie. Food is actually something. It makes you happy. It gives you comfort. It food has a very big it plays a very big aspect in my everyday life because you know it's just not about indulging. It is also about eating right. You know, I can literally feel the difference on days that I indulge and the days I'm eating clean because you know, just eating right, eating a correct proportion can really have a huge effect on your day. So yeah, food, a lot of my schedule is planned around my meals, so that's how important food is in my life. Okay, also Bhumi ma'am, you are also a role model for many people. You have become a for fat to fit. So how tough was for any mantra you like to share No, for it is tough. You know, it's not easy when you're like, when you go through such a big transformation. But I think even gaining the weight is equally tough. But some things that I followed when I was knocking off my weight after Dam Laga Ke Haisha was just, you know, I gave up a lot of things like refined sugar. I wasn't eating any gluten, eating right portions, eating on time, like not eating post 7 o'clock in the evening were small little things that really helped me. Just being aware of what's going into my body and the effect it's going to have on my body is something that really helped me knock off the weight. अगर मैं कुकिंग की बात करूँ तो फर्स्ट टाइम आपने कब कुक किया था और क्या मैं बनाया था? सच बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम कब कुक किया था एक्चुअल एक बार ना मैं स्कूल में थी तब मैंने अपने पेरेंट्स के लिए केक बेक करने की कोशिश की थी। बहुत बड़ा एपिक फेल था वो। लेकिन उसके बाद व्हेन आई एक्चुअली फर्स्ट टाइम एक्टिवली कुकिंग करी वो थी सोन चिड़िया के दौरान। तो मैं उस फिल्म के वक्त पूरा मैंने खाना बनाना सीखा था बिकॉज मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट का वो हिस्सा था। तो मैं जब भी किचन में एक्चुअली घुसती हूँ वो सिर्फ मेरे कैरेक्टर प्रेप के लिए घुसती हूँ, वरना मुझे खाने का शौक़ है और रिसेंटली पकाने का भी खाना। ओके ऑल्सो भूमि मैम कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी दोनों ही मूवी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है और कोई अप्रिशिएशन अल्टी नाउ यू हैव गॉट बिकॉज पीपल आर मिसिंग यू मैनी पीपल हैव टोल्ड कि बिकॉज बहुत ही स्मॉल रोल था बट Because it was a special appearance in both the films. शुभमंगल ज़्यादा सावधान शुभमंगल सावधान का फ्रेंचाइज है। जो डायरेक्टर है वो शुभमंगल सावधान के राइटर रह चुके हैं एंड ही समबडी हु इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड यू नो ऑब्वियसली इट्स माय फिल्म्स फ्रेंचाइज सो आई हैड टू डू समथिंग इन इट एंड एवरीबडी नोज व्हाट द स्टोरी इज़। तो मेरा शुभमंगल ज़्यादा सावधान में मैं कुछ नहीं कर सकती थी। And where Bhoot is concerned, again, the team, they are very close to me. In fact, the director is one of my oldest friends. And I just wanted to be a part of his first film. And that's why I did this friendly appearance in the film. And I'm very happy that both the films are getting love and they are doing whatever they are doing. And I'm glad that my audiences are missing me because I also miss them. I miss seeing their reaction. And but I'm going to be back now only. मैम तक मूवी आपकी आ रही है सब्सक्राइब। क्या बताऊँ मैं तख्त के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। लिटरली मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है तख्त। करण के साथ काम करना आई थिंक किसी भी एक्टर के बकेट लिस्ट में होता है। सो आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड मेरी तीसरी कोलैबोरेशन होगी ये धर्मा के साथ एंड या आई कांट वेट टू स्टार्ट। इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर एवरीबडी हु इज़ इन द कास्ट एंड अदरवाइज ऑल्सो। थैंक यू नाइस टू टॉक Thank you so much. It's MXS, and we are 2 years old now. We launched in 2018, and it's been a fantastic journey. We've learned a lot. This is our first runway show. It's our first fashion show, and we couldn't have asked for a better, a better person to sort of do this with. Godrej La Fair is a very renowned festival, and we're very happy to be a part of it and showcase our stuff.
Yes, this is our first showcase, and we are very excited. And we're going to just transport you into another world. The water body setup that we have is going to be just something that is going to be transformed, by 8 p.m. this evening. So wait and watch. Okay, Shweta ma'am, what was the idea or what inspired you to launch this MXX? Uh, well, basically, it's a collaboration between Monisha and myself. We'd done a few personal bespoke outfits with Monisha and the brand Monisha Jaising, and enjoyed working on that. And then I asked her we should do a capsule collection, and she came back and said, let's do an entire label. And that's where the brand took birth from. And 8 months later, we launched. Okay, Shweta ma'am, the people have always appreciated your lifestyle and whatever, always in a fashion. What's your fashion mantra and who have always inspired you? My fashion mantra is you have to forget about trends and you have to make sure you're comfortable in what you're wearing. And if you're not comfortable, then it will always show and then you shouldn't wear it. Who has inspired me? I'm inspired by everything, my family, my friends, my partner, my travels, books I've read. So it's all influences. Okay, Monisha ma'am, your thoughts about the fashion? Fashion for me is, actually a lifestyle. I feel that there's fashion in just about everything we do. Look at what Godrej is doing today. It's looking at sustainability. It's so with it, and for a brand like Godrej, that's a lifestyle brand that we've all grown up with. To come to us and to say, listen, MXS, we'd like you to do our show. It just shows that they've gone beyond their limits, and they're approaching new brands, and wanting to take the risk. And I just think that we're very lucky that we're here today, and showing our first showcase. Okay, lastly ma'am, any special connection today you're going to launch at the Rampok? Actually, today is going to be all the highlights. We've done about 8-9 seasons now at MXS. So it's going to be highlights and hero pieces from each one of our collections over the last year, and a few new pieces as almost a teaser of what is going to come in the next few months. So that's what there is to look forward to. Thank you, ma'am. Pleasure performing. Thank you so Thank much. you. ट्रैवलिंग करने वाले सबसे पहले तो वो जानना चाहिए उसके बारे में कि कितना एक्सप्लोर किया, कितना फन था, क्या मजा था। तो हम लोग है ना एक बहुत ही हमने बहुत सारे ट्रैवल शोज़ देखे हैं जो कि बैकपैकर्स लेकर चले जाते हैं, एक ट्रैवल शो करते हैं, या फिर कपल्स के ऊपर, या फिर एकदम हाई एंड ट्रैवल शो। ये अपने आप में एक अलग ट्रैवल शो होगा, बिकॉज इट्स अ फैमिली ट्रैवल शो जहाँ टीजे, मैं, मेरे 2 बच्चे जाएंगे। Especially traveling with twins. I हाँ think that's our USP because जब भी हम कोई No, शो बनाते हैं हमें सोचना पड़ता है how will ours be unique. So that's our. So that is one with twins, and that is one traveling to places to holy places and making religion and spirituality इन दोनों का मिश्रण करके we making it fun for our kids, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जगह हैं holy places in India जो कि forget बच्चे बड़े भी नहीं देखें, there are so many of them. So what we want to do is कि ये शो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है, because जहाँ भी हम जाएंगे there will be a history behind, there'll be something कि वो ऐसा यूँ क्यों बना, उसकी नींव क्या हुई थी, या उसके पीछे क्या बैक स्टोरी क्या है, प्लस जो लोकल मार्केट हम जाते हैं, which she's so looking forward to that. Yeah, you empower local marketing, okay, in terms of We जिस do city में really. We जाते हैं. support a lot of Yeah. local
local production, homegrown products. So we think this is a great way to explore that too. या और इनफैक्ट होम ग्रोन की बात करें तो आज ही मैं टाटा निक्सॉन में बैठा हूँ और मैं फ़ैन हो चुका हूँ सीरियसली. आई हैव टू रेव अबाउट दिस बिकॉज इट्स द आर इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार. हमारे खुद टाटा ने इंडियन कंपनी ने बनाई है एंड आई एम रियली वाउचिंग फॉर दिस कार मैन सीरियसली. सो अगेन आपने कौन से मतलब प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, सिर्फ इंडिया या अब्रॉड में भी किया है? नहीं सो अभी सो होल आइडिया इज़ वी विल वांट टू टेक इट अब्रॉड आल्सो. ओके दैट्स द आइडिया कि But खाली there's so much to see here that I Actually. have not even seen, that we have not even seen. इतने सारे मंदिर हैं, कितने सारे मस्जिद है, मतलब क्या कहते हैं चर्चेस हैं, देयर इज गुरुद्वारास, देयर आर मॉनेस्ट्रीज, कितने सारे मतलब लिटरली आई थिंक 4,500-5 हज़ार कुल मिलाकर, मतलब मंदिर ही करीबन 2,500 से 3,000 है और सबकी कहानियाँ हैं. हाँ मस्जिद कितने सारे, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर 6-6,500 हज़ार ऐसे होली प्लेसेस होंगे. बट we'll try and go as many as we can throughout our life. So ये अभी ये खाली ऐसा नहीं कि 10 एपिसोड का या 20 एपिसोड का, नहीं, ये चलता ही रहेगा. और जैसे आपने यात्रा की बात की, ट्रैवलिंग की बात की, तो रिसेंटली आपको एक फेस करना पड़ा था जब नेपाल जा रहे थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों आई थी? You need to be a responsible traveler. सुनिए चलो ठीक है, अगर मैं मुझ में थोड़ी चूक हो गई कि मैं पासपोर्ट नहीं लेकर गया Why इंटरनेशनल didn't you? ट्रैवल के लिए. Socho, why would you क्योंकि not वहाँ take पर your लिखा passport? गया नेपाल इज द ओनली कंट्री वेयर इंडियंस आर अलाउड आधार कार्ड Doesn't आल्सो matter. और take it वोटिंग कार्ड. anyway. भाई वो एयरलाइन ने मुझे जाने क्यों दिया? मेरा सवाल ये उठता है, वो जाने क्यों दिया मेरी एयरलाइन ने? हाँ फिर बॉम्बे दिल्ली जाके रोक दिया, बोले वहाँ पे नहीं जाओगे, तो बॉम्बे से क्यों जाने दिया? This is typical what guys do. Accept responsibility for what you did. आई wrong. एक्सेप्टेड. और जो कर रहे थे, ये भी खबर है कि आप शरारत को रिबूट करके वेब सीरीज में आप भी प्रोड्यूस करने वाले हैं और आप उसमें एक्ट भी करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रोड्यूस का तो पता नहीं, हमारी जो पूरी टीम है श्रुति, हर्ष, सिंपल, अदिति, फरीदा मैं, जी। फरीदा जी, हम लोग सब मिलकर प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज हमें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है पहली बात. हाँ दूसरी बात, कोई चैनल अभी nobody wants to see GC as much as डिजिटल का जो वेव आया है. सो आई थिंक इट्स द बेस्ट टू गेट इट ऑन डिजिटल एंड या हम ही प्रोड्यूस करेंगे और हम ही इसका we'll put it on our own channel called the Shararat channel. मगर फिर में आप पर्सनली कितनी फैन थी शरारत की, कितना पसंद करते थे? I loved Shararat. I think that there's not so many shows on TV that kids love to watch, and that was one. And it's really disappointing that for kids there's only like baby content. There's only like cartoons and things. But this is a terrific show. It's a show about magic, and the kids who saw it when they were younger, they remember it till today. Like now they're teenagers, and they said we grew up watching your show, and that's such a nice compliment. That's a beautiful show. That you affected kids in such a good way. Lastly, any upcoming project you'd like to share? तो अभी जस्ट हम नेपाल गए थे, जिस वजह से सारा कांड हुआ. We're basically shooting the show called The Casino. It's for Z5. बहुत जल्द, इनफैक्ट 10 अप्रैल को रिलीज़ होने वाला है, तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट. तो दो शोज एक साथ आएंगे, द कैसीनो आएगा और यात्रा, बेबी यात्रा आएगा. And looking We're forward really for it. excited Yeah, about really. it. Some I great can't times wait coming to up. Share it with everybody. Thank you, sir. Pleasure talking to you. Thank you.